न्यूटन्स लॉ कौन F equal ma ना बॉडी रो मास और एक्सीलरेशन ए वाला फोर्स एटा तो नेट फोर्स दैट नेट फोर्स जो अधिक फोर्स कम होबो वेक्टर सम बाहर करियो हला वेक्टर सम बाहर करियो अच्छा फोर्स होजी सेही जिंस जे कि बॉडी रो स्टेट चेंज करि पारिबो न्यूटन्स फर्स्ट त माने बॉडी रो दी प्रकार स्टेट अछि स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन लगी रेस्ट ऑफ मोशन से भी रिलेटिव क्वांटिटी धर तुम मो डिस्टेंस चेंज होनी मु कभी तुम रेस्ट अच्छो तुम कह मु भी रेस्ट अच्छी कि एक्चुअली जो बाइक वाला जाऊँ तुम डिस्टेंस चेंज हो तुम कह तार से मोशन अच्छी क्या तुम से दूरी जाऊँ तुम आड़ पाखी आसु योर व्यू विल बी दैट दैट पर्सन इज इन मोशन ही विल आल्सो गिव द सेम ओपिनियन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम or as per his observation you are also getting closer to him or you are getting away from him the distance is changing then his voice or his version will be you are in motion with respect to him and he will also give the same opinion but you are at rest with respect to me you are in motion with respect to somebody else so the concept of absolute rest or absolute motion is purely hypothetical with respect to earth I am observe kariba earth is itself in motion it is rotating about its own axis as well as it is rotating about sun nobody in this universe is absolutely at rest so rest or motion will be purely decided in a relative term so a reference point should be found who is observing the motion according to which person or which body or which location the motion or rest is being observed मेन पॉइंट तो ता दृष्टि रेस्ट की मोशन हम कहे तो ए बोला एमे फोर्स ला मास एंड एक्सीलरेशन इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम द नेट फोर्स विल बी पुट एट दिस प्लेस न्यूटन सेकंड लॉ बॉडी रेस्ट अछि वी आर ऑब्जर्विंग ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉट चेंजिंग देन वी सी दैट नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज a body is in motion its motion is not changing motion can change in three ways either only direction will change only magnitude of speed will change or both will change there is no change in either direction or magnitude of motion acceleration zero force zero so theoretical view first one Newton's first law theoretical कहले जे whether the force has been applied or not if the state of the body has changed there is a force which has been applied on it if there is no change in state then no force has been applied but how much force that has been applied on the body that can be found from the second law so second law gives the quantitative definition of force how much quantity of force that has been applied that can be found out from second law if the mass or acceleration can be known or calculated then force can be calculated ठीक है बुझे ना rate of change of momentum force rate of change of momentum force अच्छा ये बड़े body suppose horizontal surface ठीक है गोटे body असला तर mass हो 1 kg mass हो 1 kg से यही लाइन में जाके स्ट्राइक होला का को ग्राउंड सरफेस स्ट्राइक ठीक है जी तार वेलोसिटी मानकर 2 मीटर पर सेकंड at the just before striking the body its speed was 2 meter per second along this direction so what is the momentum initial momentum mv 2 kg per second 2 kg per second if the collagen is purely elastic perfectly elastic collagen inelastic collagen will discuss later खाली मन को elastic collagen हेतिले दीटा कांसेप्ट अछि सपोज थीटा जो सरफेस को बढ़ाइला ता सब परपेंडिकुलर lines of theta angle is बढ़ी the body has struck the surface at an angle theta with the normal to the surface yes if it is reflected making same angle with the vertical suppose with the normal line and with same speed if the collagen is inelastic then there will be loss of kinetic energy its speed will definitely decrease if the collagen is elastic
and no other extra force is acting on the body at the instant of collision जो बाड़े गला से समय कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम करू नहीं then also speed will come. Two aspects are here. Collision must be elastic. Elastic means no loss of kinetic energy. Kinetic energy what? Half m square. If kinetic energy is not decreasing, speed will remain constant. If there is a loss of kinetic energy, speed will decrease. Right? So collision elastic. At the same time, no external force is acting at the time of collision. बुझिए. अच्छा बर्तन देखो ये जो मोमेंटम आसिला এটা p pi এটা থিটা অ্যাঙ্গেল এটা pf same angle we can resolve either momentum in two components either same order the opposite order तो निद्रा होता है component ହେଲା କି এটা থিটা এটা भी থিটা থিটা লাগি যে component হলো pi cos থিটা pi আর ওটা হচ্ছে pi sin থিটা pi sin theta see final momentum তাকে রিজলভ করবা এটা হলো pf cos theta ये pf sin theta देखो ये डायरेक्शन है এটা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফাইনাল মোমেন্টাম ये सेम ऑर्डर ये अपोजिट ऑर्डर तो इधर कंपोनेंट डायरेक्शन है मतलब ये सेम ऑर्डर ये अपोजिट ऑर्डर आड़े दबो नहीं बस देखो बर्तन p is the component this one this p is the component we'll take into consideration the components only that means we'll have to forget these two vectors acha before collision before striking the surface the particle has a momentum of magnitude pi cos theta perpendicular to the wall and it had a component pi sin theta parallel to the wall and after collision it has also two components one parallel to the surface and the other perpendicular to the surface be careful the rate of change of momentum is nothing but the magnitude of force if force is non-zero that means there is some force acting on the body its momentum will definitely change and the rate of change will be the force rate of change will be the force suppose initial momentum is 20 suppose सुनो मार्क करो सब बुझियो final momentum suppose है 40 and this change took place in 5 seconds suppose same option अब डिस्कस करें तो suppose बहुत चीजें कहया पड़े मुझे ना এটা সেটা আসবে এটা ঠিক আছে ହେଲା କି suppose the body has initial momentum 20 and its momentum changes to 40 and the body is moving along the same line same direction so direction should not be considered and that change took place in 5 seconds what is the force is change in momentum by change in time what is the change in momentum 20 by 5 4 newton फेमरसी suppose 20 to 40 era change but that happened in just 2 seconds तो second कैसे quickly change हो गया in the first 8 to 5 seconds to get the momentum changed from 20 to 40 बस तो force आ गया so rate of change will decide the force not change in momentum in both the cases change in momentum same but in the second case change has taken place in at the faster pace so rate of change is the force अच्छा देखो बर्तन force apply है जिबार direction ने if force has been applied on a body in any particular direction momentum will definitely change along that direction गोटे direction से force apply है जी से direction momentum change हो केम change हो rate of change will be the force rate of change momentum will be the force अच्छा देखो we have broken the momentum into two directions one along the surface one perpendicular and we will look the two directions separately before the strike momentum was pi sin theta and after the strike along that direction momentum is pf sin theta but pi is equal to pf we have assumed the collision to be elastic so before the strike along the surface momentum was pi sin theta and after the strike it is pf sin theta same in magnitude is there any change in magnitude of momentum along the surface if there is no change in momentum then there is no force along the surface so from this way we can conclude that no force has been applied on the body along the surface no force has been applied on the body along the surface if force had been acted upon the body momentum would have changed that hasn't happened right we'll take the perpendicular direction into account
Before the strike it was pi cos theta. After the strike it has been reversed. It has been reversed. It has become minus pf cos theta. If we take the direction and become pi cos theta, it has become exactly opposite to the initial direction. So what is the change in momentum? Pi cos theta minus pf cos theta. Here pi pf are same in magnitude. So 2 pi cos theta. 2 pi cos theta. This is the change in momentum. Before the state, it was pi cos theta. Final minus initial. Yes, you can. Final minus initial pf minus pi 2 pf cos theta 2 mv cos theta. Here finding the magnitude of force. So no change will occur there. Definitely final minus initial. Definitely. अच्छा एटा change in moment of what? कार. This is the change in moment of no. It is change in moment of the body or change in moment of the surface. Body. जहाँ momentum change ता ऊपर force. एटा हम momentum change कार बार कले body को. Body रे final momentum minus body रे initial momentum. Change in momentum of the body. Whatever force will be calculated from here, that will be force on the body. Right. अच्छा along the surface there is no force. We are sure of that. अच्छा बर्तन perpendicular surface. कितना है? Change in momentum 2 because suppose the body was in contact with the surface for 0.1 second. Just before contact, it was pi cos theta. Just after contact, it became pf cos theta. So that change took place in this time interval. What is the force? Change in momentum by change in time. 2 mv cos theta by 0.1. Or if all are taken in SI units, it will turn out to be in Newton. Okay. Move on to collagen elastic. Elastic definition हम दबा. Momentum is always conserved. That is not an issue right now. If total kinetic energy of the system is conserved along with momentum, then collision will be elastic. We will discuss that later. In case of elastic collision, there will be no loss of kinetic energy. That means no loss of speed. हाँ से speed. So another factor is also involved. देखो along the surface momentum change है कि change है नहीं. कारण along the force नहीं. Listen. If the surface is rough, there is a component of motion along surface. When it strikes the surface, the body is trying to push the surface forward. If there is friction, the surface will put a backward force on the body. So that force will act on the body backward. If there is the presence of that force, which force? Frictional force. Then its momentum will decrease. Because that force is acting opposite to motion. In that case, this value will change. This value will change. Can you remember? Again, suppose this has become PF parallel dash. Okay. Initially it was PI parallel. PI parallel के PI sin theta. What is the change in momentum along the surface? PI parallel minus PA parallel. What is the force along the surface? By time 0.1. That is the frictional force. If we are provided with frictional force, we can find this value. So that thing will not be given in the question. But in JEE Main and JEE Advanced, that concept will have to be applied, and that will be given in the question. So Bartman, there is no frictional force. In that case, along the surface, there will be no change in momentum. Fine. So the force upon perpendicular to surface. Change in momentum by change in time. It is force. So elastic collision माने kinetic energy का observe. ताश में frictional force कहाँ था? देखो अब ये initial हो final हो. ये initial momentum. तार एक component pi parallel ना sorry perpendicular. इटा pi ये बड़ा करो जी. इटा momentum pi. तार जीरा component. इटा pi perpendicular. कहाँ से perpendicular? Perpendicular surface. इटा pi parallel. तो हम लिख परिबा pi equal to pi perpendicular square pi parallel square root of same thing pf equal to
PA perpendicular plus PA parallel plus square root over ହେଲା କଲର ଯଦି ଇଲାଷ୍ଟିକ ଥିବ ଏ ଦିଟା ସେମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ହବ କାରଣ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ସରଫେସ୍ ପଡ଼ିବ ଆମେ ପଡ଼ିବା ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ସରଫେସ୍ ପଡ଼ିବ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସରଫେସ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଯଦି କଲର ଯଦି ଇଲାଷ୍ଟିକ ଥିବ ଏ ଦିଟା ଏହାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଆମେ ସମାନ ହବ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆଠୁ କମିଯିବ କମିଗଲେ PF ଆଉ PI ଆଉ ସମାନ ରହିବ କି ହିପ୍ସ ରହିବ এই অ্যাঙ্গেল भी अलग आएगा ये एंगल अलग आएगा कहीं एंगल अलग आएगा देखो बर्तन देखो एटा बर्तन देखो यदि समान था इन केस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एटा PF पैरेलल एटा PF परपेंडिकुलर एटा धरो ये एंगल थीटा हो गला एटा थीटा हो गला ठीक अछि बर्तन ये छोटो हो जाबो ये समान रहइबो देखो ये समान कर दियो छोटो हो जाबो बता इटा जल्दी नहीं जाओ एंगल छोटा ना बड़ा हो नहीं इतना छोटा है ना छोटा ये छोटा एंगल छोटा चलो पर थोरली थियोरेटिकल कांसेप्ट न धरबे एंड करदो से क्वेश्चन नंबर आसीबो नीट रे ठीक बस नीट रे क्वेश्चन बहुत इजी आसे योर सरफेस से वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल था तार मतलब नहीं हमें ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट करबे को है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसीडर करबा नहीं ठीक है बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड एट कांस्टेंट टाइम इंटरवल्स गोली बुलेट गाड़ी नो प्रति बुलेटर मास सब 10 ग्राम 25 ग्राम नहीं खराब नहीं 25 ग्राम एवं बुलेट जाउची 20 मीटर पर सेकंड स्पीड जाउची ग्रेविटेशन किसी रोल नहीं इमेजिन करिया तो कांस्टेंट स्पीड रे बुलेट जाई स्ट्राइक करबा काबू वाल को से कहि जी बुलेट बाड़ाइबो एंड आफ्टर दैट इट विल नॉट रिटर्न बैक इट विल नॉट रिटर्न इट विल फॉल डाउन नो इट विल सिंपली फॉल डाउन भीतर को एंट्री गले तापर किछ डिस्टेंस जीवो अनदर कॉन्सेप्ट विल कम इनटू पिक्चर आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल इट इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट if the surface is vertical then it will come down because of gravity ठीक है it struck the wall just after striking it came to rest बुझिए अच्छा बर्तमान देखो ता माने कितने मोमेंटम रिसीव करछि के वॉल प्रति स्ट्राइक रे 20 into the momentum that the wall is receiving or the bullet is providing or bullet is exerting on the wall in each collision is you have to convert each and everything into SI 0.025 kg into 20 कितने kg मीटर पर सेकंड यूनिट ऑफ फोर्स लगा ठीक है जी कितना 500.5 so this is the momentum for each collision and this is a change in momentum also and after this strike it is coming to rest this momentum is coming down to zero this is the change in momentum in each collision this momentum is provided by bullet to the wall and frequency of firing जो bullet fire करछि frequency of firing 10 per second 10 per second so in each second 10 bullets are striking the wall and in each strike change in momentum is this much in each second change in momentum in 1 second not 0.5 into 10 5 kg per second and moment change in momentum is force so force equal to 5 newton 5 newton 5 newton ठीक है ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 5 ନ୍ୟୁଟନ ଫୋର୍ସ ପଡୁଛି हां गुड नहीं गुड फोर्स तो पर कंडीशन में आ जाए तो যদি কনস্ট্যান্টলি ফায়ার হই চলছি 5 न्यूटन फोर्स तापर पडुची ହେଲା कि तो যদি क्वेश्चन देबो टू स्टॉप द वॉल मूविंग अवे हाउ मच फोर्स विल हैव टू एक्सर्ट 5 न्यूटन ठीक है যদি क्वेश्चन देबो आफ्टर द स्ट्राइक द बुलेट इज नॉट कमिंग टू रेस्ट इट इज रिटर्निंग with 50% loss in kinetic energy
What is given in the question? After the strike, the bullet is returning with 50% loss in kinetic energy. So what is the remaining kinetic energy? 50%. If initial kinetic energy is Ki, K, then final kinetic energy is K by 2. K by 2. What is the expression for kinetic energy? Half m square. If before the strike speed is v, what is speed after the strike? It will be 1 by root 2 times v. If v becomes 1 by root 5, k will be 1 by 2 times. V square is there. If v becomes 1 by root 2 times, then k will become 1 by root 2 square, 1 by 2 times. If v is doubled, then what will be change in kinetic energy? It will be 4 times. We are given that k will be halved. So what should be the change to speed of the body? 1 by root 2 times. 1 by root 2 times. So what is the initial momentum before strike? What is the initial momentum? 1 by root 2 into 0.25. mv before strike momentum. After strike kete mv by root 2 opposite direction में. What is change in momentum in each collision or in each strike? Sum mv plus mv by root 2. Change of the difference type, the opposite direction. ये धरो 20 चेंज आड़े है ना, ये चेंज ला 10 चेंज ला 20 माइनस 10 कि मत 10 माइनस 10 इफेक्ट प्लस हो ना पाड़े ला it return. After strike its momentum has changed in direction. This become reverse of the initial direction. तो चेंज करता हो इटा प्लस है से माइनस हो ये प्लस है से चेंज करता हो इटा माइनस प्लस है जो. This is the change in momentum for each strike. How many strikes are there per second? 10. What is the force exerted on the wall? 10 units. तब साथ देखो करियो. मतलब बुझिया ना नहीं? इटा होची ये कॉलेज में. तब बहुत बड़ा क्वेश्चन आस परियो. लिमिट दो. से देखियो तो क्वेश्चन तो बिल्कुल बुझिया दरकार तो. बुझिया ना? तो हमें इटा क्वेश्चन करियो. देखो पुली प्रॉब्लम है. फिक्स्ड पुली फिक्स्ड दीटा गोटे वायर रे दीटा मास सस्पेंडेड. सपोज ये मास m1 ये मास m2 पुल रेडियस है. पता ना रोटेशन डिस्कशन करिया नहीं कहना हम सिर्फ पढ़ सकते हैं. अच्छा पुली टेंशन में टी टेंशन कौन जो फोर्स से पुली वायर टा स्ट्रेच है जो फोर्स से वायर टा स्ट्रेच है टेंशन सोल टेंशन टा बॉडी ऊपर टुवर्ड्स स्ट्रिंग फोर्स पड़ेगा away from body towards string away from body या ऊपर away from body ऊपर या ऊपर पुली ऊपर तल सरला है कि स्ट्रिंग द्वारा टेंशन पड़ेगा टेंशन टा बॉडी ऊपर away from body but towards string. अच्छा एटी फोर्स वाला m1 जी ये अप्लाई कला r अप्लाई कला वेट टा फटिया लाउना एटी पड़ला m2 जी. अच्छा ये स्ट्रिंग हमें अज्यूम करिया वेटलेस स्ट्रिंग अज्यूम करिया वेटलेस फुली फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस फ्रिक्शनलेस मासलेस फ्रिक्शन तो थिबो टेंशन अलगा आइबो एपट टेंशन एपट अलगा आइबो मास भी टेंशन अलगा आइबो रोटेशन करिवो से रोटेशन में सम फोर्स विल बी स्पेंड से थोड़ा रोटेशन करियो सर लगी टेंशन अलगा आबो कान रोटेशन नेट गोटे कथा कहि दिस मार्क कि गोटे एटा तो एक्सिस एटा बॉडी अछि हम फोर्स अप्लाई करी ए माने एटा परपेंडिकुलर अप्लाई हला ता होची आरएफ ये परपेंडिकुलर लाइन दिबो आरएफ sin थीटा 90 ले आरएफ sin 91 आरएफ गोटे परिश्रम रे कहि दोची तो गोटे फोर्स पकले ये बुलिबो. फोर्स इज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल और लिनियर मोशन. टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. है कि धरो एटा हम जो डोर अछि एटा हाइंस तो भाई आमे एपट फोर्स पकले को बुलिबो
एमती पकड़ बुलिबो एमती पकड़ बुलिबो से अधिक बुलिबो को कोस रे 90 एंगल हैला कि सबुठ कम बुलिबो जमा बुलिबो नै ए हां एंगल 0 बस 180 हैला तेणु फोर्स अप्लाई कले जे टॉर्क आसो ग्यारंटी अछि कि ग्यारंटी टॉर्क को जे आरएफ साइज में परिडिक्शन करबी तेणु बर्तमान देखो ये जो मास टा जो फोर्स पकेला ताको पुली टाको कोड बुलेबो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज राइट तो ये कितने टॉर्क पकेबो m1 g into radius इट्स कैन पुलीटा बुलेबो अबाउट दिस एक्सिस तो एक्सिस रो फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एटा का ऊपर पड़छ माइनस ना ना या ऊपर ये फोर्स कोड पकेला याको आ ऊपर बुलिया कथा पड़छ ना या ऊपर टॉर्क दरकार ये बुलिबो ना आ ऊपर टॉर्क आ ऊपर फोर्स टॉर्क सृष्टि करिवो या ऊपर फोर्स की टेंशन पड़िवो कोड पड़िवो तळु टणालो तो से बुलिबो ता जो पड़े ए की पकले ये पकले टेंशन सॉरी टेंशन हला ये सब टेंशन एठी टेंशन टी हेला सी मेटल कितना पकेबो टी इनटू आर कोडे एंटी क्लॉकवाइज दीटा अंग नेट कैंसिल हो गला नेट टॉर्क 0 देयर विल नो रोटेशन जो ऊपर जो टीटा नहीं जन से टी इज इक्वल टू m1 g नो नॉट एट ऑल ओला से बाहर कर m1 g ना भाई ओला बड़े बाहर कर सेटा बाहर कर बता लगी किसी प्रॉब्लम ग्लास पर क्लियर हो कौन पे कबले क्लियर हो कौन पे कबले पूरा क्लियर हो ହେଲା बर्तमान टी अलगा m1 g अलगा टी अलगा जदी एरा ये मूव करन था ना टी गले m1 g देखो दिस जस्ट if it is moving coming down with certain acceleration if it is coming down with certain acceleration there is a net force downward m1 g minus t that is that force then t is different if the acceleration 0 m1 g equal to t स्किल थोड़ा सा पढ़ लीजिए बुझलो ना बुझलो ना ती पढ़ो तो कौन करछलो मुई जानि पाउनी बुझलो ना हां और छोड़ देखो तो बर्तमान देखो टेंशन दिशा समान ही गला जति क्लॉक আছে দেখেন লাডু ক্লক নেট অর 0 रोटेशन হবে কি रोटेशन হবে যদি रोटेशन होजी हमर जेन फोर्स इक्वल मास इन एक्सीलरेशन लिनियर मोशन दी रोटेशन मतलब टॉर्क और मास वाला आई केबल ठीक है रोटेशन बट विद एक्सीलरेशन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया से परे पड़े तो बटन छाड़ दियो खाली बर्तमान मन रखो से मोमेंट ऑफ रोटेशन मोशन पढ़ाओ ताको करना पड़ले यार गाड़ छाड़ दबा विल गो स्टेप बाय स्टेप अरे जो टेंशन दा सेम रहला तारे रोटेशन हबन हबो सुनो जदि फोर्स ता 0 रहला मोशन हबना नहीं ना फोर्स 0 रहले मोशन ता चेंज हबनी जो स्टेट ता सही स्टेट रहइबो रेस्ट रहइबो जदि मोशन दिबो सही मोशन रहइबो त फोर्स 0 दिले मोशन हबना नहीं बड़े बड़े फोर्स 0 net force 0 na force net force on the body is 0 is there any motion in the body it can be हां तो ठीक से रहइबो कि चेंज हबनी तो फोर्स 0 माने न तो मोशन 0 जानि पला जे मोशन दिबो से मोशन कंटिन्यू करिवो बुझला बस देखो बर्तमान कोन अछि सेम दी रोटेशन मोशन पडिना जदि फ्रिक्शनलेस पर इजी थिंग्स तो डिस्कस करिया था डिफरेंस आसीबो फ्रिक्शनलेस आउ मासलेस हेदिबो देन गोटे सूतार टेंशन सब जगह समान पड़िबो ये सूता वेटलेस भी थाए पर सूतार वेट मास আছে से टेंशन बेरी गइबो से प्रॉब्लम करिया सूता जो वेटलेस में तार भी मास अछि सूतार डिफरेंट पर टेंशन डिफरेंट हो बिकॉज़ एक्सीलरेशन अछि वो सूता को पूरा अति लाइट कर देली तार मास नहीं तो सूतार प्रति पर टेंशन सेम बस ठीक है ठीक मतलब ये एक्सेलेरेशन तळु खसला ये एक्सेलेरेशन नहीं बुझो कने मैं अज्यूम करे सूता स्ट्रिंग कैनॉट बी एक्सटेंडेड द स्ट्रिंग कैनॉट बी कंप्रेस्ड इट इज इनएक्सटेंसिबल इट्स लेंथ विल ऑलवेज बी सेम यदि लेंथ सेम रहइबो ये जो रेट चेंज हो ये भी रेट चेंज हो ये तळु को चेंज हो ऊपर चेंज हो इफ इट इज कमिंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन इट विल मूव अप
which acceleration is right. There is an acceleration of both of the bodies. So there is net force on both the bodies. For this body, if we consider all the forces for this body alone, then that diagram will be called as free body diagram. Free body diagram. So free body diagram will be drawn for each body separately. For M1, we are having two forces. Earth is exerting force M1G, body downward. Tension is acting upward. There are no other forces. So M1G minus T is the net force because the body is coming down with some M1A. For the second body, if you draw the free body diagram of second body, there are two forces also. T is acting upward, M2G is acting downward. T minus This body is moving upward. This will be bigger in magnitude. Net force is T minus M2G. M2 acceleration. बुझे ना ने? या ये जाओ जो बड़ा ऊपर को, तो बड़ा क्या? T बड़ा. Net force T minus M2G. सेता mass acceleration. ये जाओ तले को, बड़ा क्या? M1G. बस. बर्तन कौन करेगा? इधर ऐड कर दो. ऐड कर दे M1 minus M2G equal to M1 plus M2A. A equal to M1 minus M2 G by M1 plus M2. This is the acceleration of both the bodies. Okay. Then we will calculate the tension. We can put the value of A in the equations. Suppose we put the value of A in the first equation. M1G minus T equal to M1 times A. What is A? M1 minus M2 G by M1 plus M2. What is T? T equal to M1G minus M1 times M1 minus M2 times G upon M1 by M2. M1 plus M2. So LCM M1 plus M2. M1 into M1 plus M2 times G minus M1 into M1 minus M2 times G. तो एक्सप्लेन कर दो बा M1 स्क्वायर है जो इटा M1 M2 है जो इटा माइनस M1 स्क्वायर है जो प्लस M1 M2 है जो G by M1 plus M2 ये कैंसिल हो गया 2M1 M2 G by M1 plus M2. This is the tension in this. This is the expression for tension. This is the expression for acceleration. समझना? कितने समय है? 32 काट दे.